that nearly 1 in 3 adults may have fatty liver disease, and many don't even know it. You might feel perfectly healthy, yet your liver could be silently accumulating fat, leading to inflammation, fibrosis, cirrhosis, and even liver failure over time. The good news, in most cases, fatty liver is reversible. Today, we'll discuss what fatty liver is, why it happens, what are the warning signs to watch out for, how does it affect your health, and most importantly, how to reverse it naturally and effectively. So, what is fatty liver? सबसे पहले आपको फैटी लिवर के बारे में पता होना चाहिए कि फैटी लिवर क्या होता है. As you know, liver is one of the most important organs in the body. It helps in detoxification of harmful substances. It helps to process nutrients. It regulates blood sugar and metabolizes fats. It produces essential proteins. So fatty liver occurs when excess fat accumulates inside liver cells. Normally, liver cells में फैट होता है, पर जब फैट की क्वांटिटी लिवर के वेट से 5% बढ़ जाती है, then it is considered as fatty liver disease. फैटी लिवर डिजीज़ दो टाइप्स की होती हैं. एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ एंड द सेकेंड इज कॉल्ड एज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, या जिसे हम MASLD भी कहते हैं. जो MASLD है, इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर एंड इट इज़ इंक्रीजिंगली कॉमन ड्यू टू मॉडर्न लाइफस्टाइल्स. जो MASLD है वो बहुत बढ़ रही है. इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन ड्यू टू मॉडर्न लाइफस्टाइल्स. सो द क्वेश्चन ऑफ द डे इज़ वाई डज़ फैटी लिवर हैपन. ऐसा क्यों होता है? तो लोगों में फैटी लिवर क्यों डेवलप होता है? द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन इज़ दैट ओनली अल्कोहल कॉजेज फैटी लिवर. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सिर्फ अल्कोहल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ फैटी लिवर. In reality, many people who don't drink alcohol, they have fatty liver. So what are the causes in people who do not consume alcohol? उनके जो causes हैं जिनकी वजह से उन्हें fatty liver develop होता है, काफ़ी causes हैं. कुछ causes के बारे में आज बात करेंगे, जैसे excess body fat. जो लोग मोटे हैं, जो लोग obese हैं, उनमें fatty liver का चांस बढ़ जाता है. जिन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम है, उनमें फैटी लिवर का चांस बढ़ जाता है. जो लोग प्री डायबिटिक हैं, उनमें फैटी लिवर का चांस बढ़ जाता है. जो लोग टाइप 2 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनमें भी फैटी लिवर का चांस बढ़ जाता है. इन कॉजेज़ के अलावा हाई ट्राइग्लिसराइड्स ऑल्सो लीड्स टू फैटी लिवर. सेडेंट्री लाइफस्टाइल, more than 8 hours of sitting per day, it also leads to fatty liver. Excess intake of sugary beverages, processed foods, poor sleep, chronic stress, ये सारे कॉजेज़ हैं जिनसे एक पेशेंट में फैटी लिवर डेवलप हो सकता है बिना अल्कोहल कंजप्शन के. सो वन ऑफ द बिगेस्ट कल्प्रिट्स इज एक्सेस फ्रुक्टोज फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रॉम पैकेज्ड जूसेस एंड प्रोसेस्ड फूड्स. When the liver is constantly overloaded with excess calories and sugar, then it starts converting them into fat. और यही वो फैट है जो लिवर में स्टोर होता है, जिसकी वजह से एक पेशेंट में फैटी लिवर डेवलप हो सकता है. So what are the signs and what are the symptoms that a patient feels when he is suffering from fatty liver? एक रीज़न जिसकी वजह से फैटी लिवर डेंजरस है वो ये है कि most people have no symptoms. Not every patient will be symptomatic. However, some people can experience persistent fatigue, low energy, brain fog, discomfort or heaviness in the upper right abdomen, difficulty losing weight, and elevated liver enzymes on blood tests. But unfortunately, ये symptoms जो हैं ये फैटी लिवर के later stages में develop होते हैं और शुरू के stages में कोई symptoms नहीं होते. That is why routine health screening is so important. अब if a patient develops fatty liver and ignores it, what can happen? What happens if you ignore fatty liver? Fatty liver, as you know, it is not just a liver problem, but it's closely linked with insulin resistance, with type 2 diabetes, with high blood pressure, with high cholesterol, heart disease and stroke. Over time, अगर फैटी लिवर को हमने करेक्ट नहीं किया, रिवर्स नहीं किया, ये प्रोग्रेस कर सकता है इन्फ्लेमेशन, सिरहोसिस, फाइब्रोसिस एंड लिवर फेलियर तक. तो दिस प्रोग्रेशन कैन टेक ईयर्स, which is why early intervention is so powerful.
अब हम फैटी लिवर को कैसे रिवर्स कर सकते हैं? हाउ कैन वी रिवर्स फैटी लिवर? सबसे एनकरेजिंग न्यूज़ इस पूरे टॉपिक के बारे में ये है कि फैटी लिवर इज़ ऑफन रिवर्सिबल। तो रिसर्च ये बताती है कि अगर आप 7 to 10% बॉडी फैट परसेंटेज अपनी कम करें तो आप अपनी लिवर हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। तो वेट लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पीपल हु आर ओबीस, हु आर फैट. They have to reduce 7 to 10% of body fat to see significant results in fatty liver. तो आप कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हैं? आप अपना शुगर इंटेक कम कर सकते हैं जिससे आपका फैटी लिवर मैनेज हो सकता है. You have to avoid soft drinks. You have to avoid sweetened beverages. You have to avoid sweets. You have to avoid processed snacks. शुगर की क्वांटिटी आपकी डाइट में ज़ीरो होनी चाहिए. आपने शुगर अपनी लाइफ से कट कर देना है. आपको प्रोटीन prioritize करना. You have to prioritize protein. Your protein sources should be eggs, fish, chicken, dairy, lentils and legumes. You have to exercise regularly. आपने physical activity अपनी बढ़ानी है. आपको resistance training करनी है 3 to 4 times a week. You have to do walking or zone 2 cardio and you need at least 150 minutes of activity per week. तो एक्सरसाइज और डाइट के अलावा यू नीड टू इम्प्रूव योर स्लीप. यू हैव टू टारगेट अ गुड पीसफुल स्लीप 7 to 8 hours nightly. You have to manage your insulin resistance. You have to focus on weight loss. You have to focus on better nutrition. You have to focus on physical activity and medical management also. You have to keep a doctor on board whenever you are treating yourself, whenever you are getting treatment for fatty liver disease. And some patients supplements we can advise and they can be helpful, but the most important foundation in treating fatty liver is lifestyle modification. Fatty liver is one of the most common yet overlooked health conditions today. The earlier it is detected, the easier it is to manage and reverse. If you have elevated liver enzymes, if you have abdominal obesity, if you have diabetes, if you have high triglycerides, you have to get evaluation done. You have to get yourself evaluated. At Navayu Health and Wellness, we focus on identifying the root cause of metabolic disease and creating personalized plans to improve liver health, weight management, and long-term wellness. If you found this video helpful, you can like, subscribe, and share it with someone who needs to hear this. Your liver works for you 24 hours a day. It's time to take care of it. Thank you.